Hi everyone. Hey guys. Hello, hello, hi. Hi Milan. सुनाई दे रहा क्या? The audio all okay? दे रहा क्या? सुनाई? Hey guys. Hi, 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 hi. Good evening, good evening. कैसे हैं सब लोग? How's everybody doing? All good? Hello. Hi Milan, Shivraj. Hello there. Hi Mansi. Hi Aishwarya, Nikunj. Good evening everybody. How are you doing this fine evening? Aditya. Hi Aditya. There is no specific reason why you should not attend the session. So you can attend the session, but you have to ensure that you watch the previous ones also. Okay, don't forget to watch the previous ones. Yes, hello Tanishq. What is the significance of Propel batch? Swastik, पूरा देखो session पता चल जाएगा. The reason why I named this particular series on YouTube as Propel batch is because normally people don't start their preparation this early, which is a common misconception that you need only 6 months for preparation, you need only 9 months for preparation. But technically speaking, there isn't any specific time period when you should start your preparation. So whenever you think it deems fit to you, that is when you can start your preparation. So the reason why I call this Propel batch is because you would get a boost over other candidates who would start later. Yeah. Good evening, everyone. Hi, hi, hi. Hello. Milan, for that, you're going to have to take up aeronautical engineering, just like I did. To propel is to launch yourself, the propel is to move ahead, move forward. Yes, that's the actual meaning of it. Uh, propel is a term used in aeronautical and aerospace engineering where a moving body gets a push, right, a thrust. So hence propel batch. And also because आप लोग ऊपर तक जाने वाले हो तो that is why. Good evening everyone. This is our first lecture on simple and compound interest. Now let me tell you something about this lecture. This lecture will lay a very strong foundation for all upcoming sessions on simple and compound interest. So what I want from your end is for you to give in your 100%, start responding to messages, start responding to the questions I ask, and we can with this series with this chapter we can call that simple and compound interest is done. That is why. Hi, hi. Good evening, everyone. Uh, SK we have already done with. We are already done with percentage and profit and loss. So I guess about 15 lectures. Yes. Good evening. Good evening. All right. Beautiful. Let's go. Let's go ahead. My name is Amit Surana. I do not look like this anymore. So if any one of you think that I should change this picture, so please go ahead. Please change this picture. Hit a like in this video, and from the next lecture, I'll definitely change it. How many of you think I should change this lecture? Hit like on this video. Good evening. Good evening. Can I miss something? You are allowed to miss anything. You are allowed to miss, your your ex. You are allowed to miss me anytime apart from 8 p.m. to 9 p.m. But you should not be missing anything. I don't know what you're asking. Are you asking, did you miss something? Technically, no. All right, so I am Amit Surana. I am an aeronautical engineer, like I like to show off. I have 6+ years of experience teaching quantitative aptitude and other subjects. And I have trained over 2 lakh students so far. I've also been an Academy's top 13th educator once. हाँ समझ गया आशुतोष मजाक कर रहा था यार आई वाज पुलिंग योर लेग आई थिंक अब तक 15-16 लेक्चर्स के बाद आई थिंक नाउ आई हैव द लिबर्टी टू पुल योर लेग व्हाट डू यू गाइस थिंक अभी तो टांग थोड़ी खींचनी चाहिए कि नहीं टांग किस लिए बनाई है भगवान ने टांग इतने लंबे इसलिए दिए कि खींच सके थोड़ा ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट
Okay, let's talk about the terminology. Since this is the first lecture we're having on simple and compound interest, it's very important that you understand the terminology and not get confused or not get trapped in the kind of words used. So let's go ahead. Let's talk about names. Let's take names and kick some bottoms. Okay, so let's talk about terminology. The first thing that we have to talk about when we talk about money is the basic amount, right? The amount before any interest is applied on that, which is called your principal. Yes, not the one in your school जिनको आप बहुत ही ज़्यादा respect देते थे. Not that person, but yeah. So principal is what? Your basic amount. Yes, the amount that you borrow from someone or you lend if you are rich enough. अगर आपके और आपके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो you can lend it to people as well. That amount that you lend becomes the principal. Yeah. After principal comes headmaster. कोई नहीं बोलेगा. No, ऐसे गंदे jokes नहीं मारेंगे यहाँ पे कोई. The next amount, the next thing that we have to talk about is interest. क्योंकि apparently बहुत लोग दिखा नहीं रहे. बात क्या है? Go ahead, hit like on this video. Jaldi, jaldi, jaldi. So interest is what you earn, right? What anybody earns, what the lender earns, right? So earning is your interest. Yes, just like in profit and loss, profit is the earning, correct? P&L में हमने बात की थी कि profit is the earning, the extra amount that you get. That is interest in this case, okay? And then we have other terms like your time period. Yes, time period is for how long was the amount lended or how long was the amount borrowed or how long did you keep the amount in the account, all of that. Yes, time period mostly represented in terms of years. Yes, when we're talking about time period, we should also talk about your rate of interest, which is at what rate, at what percentage is the amount, is the interest calculated. Yes, so rate of interest is I, which will be in terms of percentage, and in most cases it will be per annum. What do you mean by per annum? For every 12 months. Got it? So let's not talk about months yet. Let's talk about per every year. Yeah. And the last thing that we, okay, last but one thing that we have to talk about is your number of times, you compound an amount, number of times. So we call that as N, we call it as common divisor. Yes, which is denoted as N. This will come in action when we talk about compound interest. So abhi ke liye N hai, yaad rakho. N is again number of times. Yes, number of times. So there's no specific unit for it. Yeah. And the last thing that we have to talk about, and as important as every other thing, that is your final amount. Yes, the amount, the word amount is a very common word, but your amount is nothing but the final amount or the selling price, something of that sort. So amount denoted by letter A, which is nothing but your basic principal added with the interest. Yes. So amount A is nothing but principal added with the interest, that becomes A. Cool. Oh, sorry, rate of interest is to be denoted by R. I is the interest amount. My bad. Okay. Done. I saw Udit's message, Aditya's message, and I thought, yeah, R rated तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहा है? R rated तो कुछ भी नहीं है, सब तो PG है. क्या बात? Alright. So this is the terminology. These are the words that would be used. Yes, lender is someone who gives out money. Borrower is someone who takes money. Who borrows money. The literal terms there. Cool. So that's terminology. Something that we have done and dusted. Now let's talk in detail about something called interest. Okay. Are you all up for it? सबको सुनाई बुनाई दे रहा है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. बात क्या? How are you guys doing? Ladies, gentlemen. Okay, let's talk about interest now. Interest is, what interest people to lend out money, right? उनका इसमें क्या है? Yes, what's in it for me वाला जो answer है, that is the interest. The interest is the extra amount that a particular
lender earns, be it bank, be it a loan shark, be it anyone who lends out money. Simple as that. Yes. After rate of interest, I don't see. क्यों? देखो, देखो मना कौन कर रहा? Okay, let's talk about interest. Like I said, interest is the earning, right? I is nothing but the earning, which can be denoted by this term. I is basically your amount, the final price, the final sum that you get minus the principal. Yes, interest is amount minus the principal, and there are two forms of that. We'll talk about that in a while, but quickly go ahead, start answering this question. Jaldi. तने तने बाकी सबको बराबर दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? बाकी सबको सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा. There is no lag, there is no. Is it in blur to everyone? आशुतोष, तने, गाइस एक बार जो है ना, रिफ्रेश कर लो अपना इंटरनेट, एक बार ही चेक कर लो कि मैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा हूँ एंड इट सीम्स ए ओके. हाय निशा, गुड इवनिंग. हेलो वैभव. व्हाट? हाय बालाजी. अरे वैभव, एनी टाइम बड़ी, एनी टाइम. थैंक यू मत बोलो, थैंक यू मत बोलो. एक सब्सक्रिप्शन ले लो. नहीं, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ. नहीं बट ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो. हाय सचिन, गुड इवनिंग. सेकेंड वाला क्या? सेकेंड वाला अच्छा, इन दिस scheme 1, scheme 2. Okay, so correct, second one should be accepted, second one should be accepted. And why would that be? So look at this. A bank is approached with two schemes, one involving the base principal remaining a constant and equal interest coming in every year. So scheme A says what? Same principle रहेगा throughout. Yes, over the time same principle रहेगा. The principle doesn't change, it remains constant for however long things go. Yes, and it is saying same interest would keep coming in every year. Yes. Now what this question fails to address is the rate of interest. So we are going to accept, क्योंकि ये मैंने type किया, we are going to accept there are a few shortcomings in this question, but ठीक है. Okay, this is scheme 1, scheme A or scheme 1. Give, I know what is coming now. 21 दिन में पैसा डबल. ये अनुराधा की बहन है. अनुराधा इसकी बहन है. Okay, in the second scheme, what happens? In the second scheme, over the period of time, 1 year, 2 years, so on, the principal keeps changing with respect to the rate of interest. So if I say rate of interest is R, then in the first year, principal would remain the same in the first year in both cases, but interest would also keep changing. So second year, what would happen? This interest gets added to this particular thing. So you would get a different interest for the second year. In the third year, what will happen? This would also get added. Yes, so it keeps increasing. New interest comes in every year. This is scheme B. Yes. So which one should a bank go for? Would a bank earn good amount if it kept things constant, or would it earn more if it goes for scheme B? That's the question, right? So scheme B definitely seems like getting us more money because every year principal changes, every year the interest also increases, right? So I1 is less than I2 is less than I3 and so on. So the interest keeps increasing every year. That means for the same period of time there'd be more money. Yeah. So if and when, and obviously banks go for scheme B, what would they be thinking? They'd be thinking paisa hi paisa hoga. Yes. Yeah. Now this is the difference between what? This is your simple interest. Yes, this is under a concept called simple interest. And this one, the second scheme, is under the concept called compound interest. Cool? Done? Clear?
Correct, Shivraj. Very good. Very good. Very good. Correct, Balaji. So bank normally, this is one reason why banks go for compound interest. Yes, even when you have an account and you deposit money, it gives out amount in terms of compound interest, and even when it gives out a loan, it is in compound interest. Okay, done, everybody. तो 2020 में आप कुछ लॉजिक क्वेश्चन भी देता था, 2021 में क्या हो गया? अरे सब बदल गया, अरे चिंकी बदल गई मेरी, मैं क्या करूं? सब बदल गया, एवरीथिंग हैज चेंज्ड. You mean puzzles ना? Puzzles ना? Puzzles करेंगे, don't worry. चलो, let's quickly discuss the difference between simple and compound interest, something that we have discussed just now. Yes. तो simple interest में क्या होता है? Simple interest, your principal remains constant every year. Your rate of interest remains the same every year. Got it? Every year, everything remains the same. Cool. Nothing changes over the period. Yeah. What happens during compound interest? During compound interest, we just discussed, the principal keeps changing. The base principal, the amount that he or she puts in is the same, but it keeps changing with respect to the calculation, right? So this is variable. Ultimately, what will happen? The interest calculated for that year will also become variable. Yeah. Now, with interest, what you need to understand, the general idea of interest is applying a particular percentage on the principal. So on the principal, if I apply a particular percentage, R percentage, yes, so R percentage of P is nothing but that interest. So for example, if I say that 100 rupees were deposited, yes, an amount of 100 rupees were deposited at a rate of 10 percentage, then in the first year, what will happen? The amount would, sorry, the interest would basically be what? 10 percentage, that is R percentage of P. That's going to be what? 10 percentage of 100, that is 10 rupees. Clear? And what would it amount to? What would the amount be? Amount is going to be constant in this case, in both cases, just that the amounts would vary. So amount is nothing but principal plus interest. Done? Any questions here? So guys, you know a little bit about me. You've attended two whole topics with me, and you know that I am someone who does not go with formula. I prefer logic over formula. Okay, I prefer logic over formula. So what I want you all to do is formula ko rakho backup mein, right? Formula should always be your backup. If nothing else works out, then yes, use the formula, get it over with. The reason why I say formula is not the preferred method to do any question is because the questions may not be as direct. आज जो हम करने वाले हैं वो बेसिक क्वेश्चंस है, आई नो, बट क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कैट में तो आते नहीं है. या सो लॉजिक इज ऑलवेज प्रिफर्ड एंड दिस इज व्हाट यू शुड गेट गुड एट. समझ गए? दिस इज व्हाट यू शुड गेट गुड एट. या हाय प्रीतम, थैंक यू सो मच बड़ी. सेम टू यू. आई डोंट नो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. क्या बोलूं मैं, इसका क्या जवाब दूं? चलो अभी बात करते हैं इन डिटेल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. यस, वी नो ऑलरेडी, वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है? प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट. यस. हाउ इज दिस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड? Since every year your interest will remain the same, interest would basically be what? R percentage of P. Yes, so we had discussed this 100 rupees that you have in the first year, it will lead to what? In the first year, at 10 percentage, it will lead to 10 rupees. Yes. What would happen in the second year? What will be the interest in the second year? Fatafat batao. What should be the interest in the second year? जल्दी. सेकेंड ईयर में अपना इंटरेस्ट क्या रहेगा? 100 रुपए है, ठीक है, 100 की एकदम कड़क कड़क
सौ का कलर क्या है आज? पहले तो हरी पन्नी बोल देते थे हर चीज को, राइट? हरा नोट बोल देते थे, आजकल हरा बोले तो 20 रुपए हो जाता है, कोई कदर ही नहीं है हरे नोट की। तो 100 रुपए का क्या पर्पल नोट आता है, राइट? 100 रुपए की एकदम पर्पल पर्पल वाली नोट आपने डाली बैंक में, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, और फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 10%, प्रोवाइडेड इट इज अंडर सिंपल इंटरेस्ट। या निशा, नो, right? Every year, like I said, every year it remains the same. Yes, does not change, remains the same. So second year also it will be 10 rupees. Yeah, it will be 10 rupees. That means 2 years together, first year और second year को मिला के कितना हो जाता है? 10 plus 10, 20 rupees. Agreed? Yes. 10 plus 10, 20 rupees. नहीं तने, नहीं तने. You're going ahead. You're going ahead. Don't go ahead. ये जितना है उतना ही रखो उसको. That is compound interest what you're doing. ठीक है? So 20 rupees. Can I say this 20 rupees is nothing but 10 and 10, 20 percentage of 100. This 20 rupees is nothing but 20 percentage of 100. And 20 percentage can be given as what? 2 times 10 percentage. है ना? This is nothing but 2 times 10 percentage. So the number of years this keeps getting calculated, उतने times में अपना interest हो जाएगा for those many years, not for that particular year, for those many years. तो 2 years मिला के 20, 3 years मिला के 30, 4 years मिला के 40, ऐसा, right? So interest for not 1 year but let's say T years. Yes, interest कहाँ गया ये? हाँ, interest for T years is going to be how much? This R percentage applied at for P, but how many times? T times. Got it? अगर T years है तो T into R percentage basically, तो 10 percentage है 2 years में 20 percentage, T years में T into 10 percentage. समझ में आ रहा है? Yes. So this is how the formula came into existence कि simple interest is equal to P into R into T by 100. Yes. So I don't want you to mug up this formula. ये तो सबको याद ही होगा. I think anyone who has done simple interest, compound interest in the school, ये तो पता ही होगा. But I don't want you to mug this up. PRT or PTR by 100. Don't mug it up. Remember as what? R percentage of T applied on the principal. That's it. Yes. Got it? R into T percentage applied on principal. Clear? शिवराज, हाँ बात करेंगे उसका, सब बात करेंगे उसमें. सक्सेसिव लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लग सकता है. वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. अच्छा, a few things that I want you to tell you about simple interest is that the interest here increases, the amount, not interest, the amount increases gradually, right? Slow and steady बढ़ेगा, but बढ़ेगा. Done. चलो एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन. 3 minutes बहुत ज्यादा है पता है, बट चलो लेट्स ट्राई. क्विकली आंसर दिस. आंसर करो इसको. No, moderator, interest doesn't change. Interest for those many years will change, for that particular year will not change. So amount you can say will be in AP, not interest. ठीक है? Very nice. Option A. Ivanshi says option B. Others? A, B, A, 271.2. Okay. Very good, very good. Superb, superb. अमेजिंग वर्क है. सब बता दो. इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, शर्म मत खाओ. But Saurabh says
Option B. Mansi says option B. Everybody else says option A. Beautiful, guys. Very nice. Very good. Milan says option B. Nikunj option B. Aditi A. Shivraj B. Bimlesh A. सही है सही है. Very good. चलो, let's discuss this now. Okay. So we know 452 is the principal क्योंकि वही देते हैं normally. 452 in 5 years बोला है 12%. Okay. Now there are two ways of doing this. Either go 12%. मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई कैन ईदर डू वन फर्स्ट ईयर में क्या होगा 12% आर परसेंटेज ऑफ पी है ना. सो 12% ऑफ 452. यस. फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में अगेन 12% ऑफ 452. This is going to go on for 5 years. Yes, fifth year तक same चलेगा. So instead of doing this separately, what we could rather do is call all of this together क्योंकि ये same ही amount है, nothing is changing. So 12% for 5 years. Can I say, guys? Can I say like this? कि 12% for 5 years is the same as 60% for 1 year. ये ट्रू है नहीं है, ट्रू और फॉल्स? जवाब दो फटाफट. 12% for 5 years is the same as 60% for 1 year. ट्रू और फॉल्स? आंसर करो जल्दी. या ट्रू फॉल्स? कलर कम पड़ रहा है मेरे को. Quickly tell me, is 12% for 5 years the same as 60% for 1 year? हाँ ना. True, everybody. Super, beautiful. So what I'm instead going to do is, instead of calculating 12%, I'm directly going to go calculate 60%. Okay. So what would it be? Our interest is going to be 60% of 452. Yes, which is how much? 50% plus 10%, है ना. I don't want to, I can multiply and do it, of course, but ये calculation थोड़ा सा simple रहेगा. So 452 would be how much? 226 rupees, and 10% would be how much? 45.2 rupees. So what is the interest amount? 0.2172, right? So 271 rupees 0.2, 270 rupees and 20 paise is going to be my answer. No, why? क्योंकि ये जो आपने लिया है गाइस, ये जो तीर था ये उड़ रहा था, ये कहीं तो उड़ रहा था. आपने बोला कि भाई मैं फ्री हूं आजा, तो कहीं उड़ ही रहा है, मैं फ्री बैठा हूं आजा. व्हाई नॉट? दिस इज योर उड़ता तीर गाइस, दिस इज योर ट्रैप. बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग is very specifically asking how much would 452 become. Yes, they're not asking how much will 452 earn, they're asking how much would 452 become. Yeah, that basically means they're asking for what? Amount. Not the interest, they're asking for the amount. Please get this clear, okay? Yeah, so what will be the amount? Amount we all know is what? Principal plus the interest. So principal is 452 rupees and the interest is 271.20 rupees, which is how much? 723 rupees and 20 paise. Got it? So your right answer is option A. Option B, option A is your trap. Done? Yes, no, yes, what? Done. So please be careful, guys. The reason why I had to spend so much time in talking about the terminology, the nomenclature, is because a lot of people make a mistake. So out of all of you who are attending this session, I think at least 90% of you all have said option A in the first go. बाद में रियलाइज हुआ लोगों को कि क्या हो गया, ये तो मैंने गलती कर दी. यस, ठीक है. तो ट्रैप गिरो, कहीं पर भी गिरो, ठीक है, ट्रैप में मत.
यस, एसआई के फॉर्मूले से नहीं कर सकते, मैंने मना नहीं किया। मैंने ना आज तक मना किया है ना आगे जाके मना करूंगा। फॉर्मूला बनाया इसलिए यूज करने के लिए, यूज करो आ जाएगा सेम चीज। बट जब दिमाग यूज हो सकता है तो क्यों फॉर्मूला के पीछे भागे? दैट्स द बिग क्वेश्चन। ठीक है, गॉट इट। तो ये वाला गलती फिर से नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला गलती फिर से नहीं करेंगे। एक बार कर दिया बस, ये रजिस्टर कर लो कि अब से हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे एंड देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 3 मिनट है टाइमर, अभी तक लाइक आए नहीं है बहुत लोगों के। फोटो बहुत अच्छी लग गई क्या मेरी? मेरी फोटो बहुत अच्छी लग गई कि नहीं सर आप इसी में बहुत प्यारे लग रहे हो, आप यही लगाओ। लाइक करो गाइस। चलेगा, एक बार ही गिर गए ट्रैप में तो ठीक है, चलेगा, एक बार ही तो चलेगा, कोई नहीं। बस सेम ट्रैप में दोबारा नहीं गिरेंगे कोई भी, ओके। आशुतोष, पहले बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में जब नॉमेनक्लेचर बात कर रहे थे, टर्मिनोलॉजी बात किए थे, तब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज योर फाइनल प्राइस, यस, योर फाइनल सम, है ना। तो इनिशियली 452 हुआ था, दिए थे, दोबारा जब आएगा हमारे पास वो कितना बन के आएगा? 723 रुपीज एंड 20 पैसे, ओके। आशुतोष, अगर वो वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बाद में देखिएगा, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी मैंने तो समझा दिया, बट दोबारा से एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। अरे अर्पण, अच्छी आई होती तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे पढ़ा था होता, मैं खुद आईआईएम में बैठा होता, मस्त मैनेजमेंट जॉब कर रहा होता। ये गिरा। अरे आप लोगों के ऐसे पीछे दिमाग में ऐसा नहीं आता है वो वाला गाना जो शाम के पीछे आता था, जो साइन करने जाता था कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अच्छा, ये एक चीज आपको पता है क्या कि स्कैम करना एक लत हो जाती है। एक बंदा अगर एक बार स्कैम कर ले तो वो उसको मतलब नहीं छूटता है उसको, वो आदत लग जाती है। ऑप्शन बी जिनने भी दिया है पकड़ लिया है तीर एकदम, वेरी गुड। या गाइस आप लोग कैट क्यों दे रहे हो? आप लोगों को तो क्रिकेट विकेट खेलना चाहिए, जहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहिए, जहाँ पे उड़ती हुई चीजें को आप पकड़ना चाहते हो। दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब सब बदल रहे हैं, अब सब डी 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 कर रहे हैं, डी 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 कर रहे हैं अभी सब। Let's read this question. If a sum of money is invested at simple interest yields an interest of 24,000. Yes, interest क्या है? 24,000. Yes. अभी zeros में मैं involve अभी नहीं होना चाहता हूँ, तो I'm gonna call it what? 24K. Alright, 24K. Now this is for what? 3 years together. तो कैन आई से एवरी ईयर आई होगा, तो 3 years में 3i हो जाएगा। यस, दैट बेसिकली मीन्स, सो क्या होता है वो? फर्स्ट ईयर में आई, सेकेंड ईयर में भी आई, थर्ड ईयर में तो आई भी थी, ठीक है। तो टोटली दिस इज 3 times आई, है ना, 3 years में। सो 3 years में 24,000, सो कैन आई से इन 1 year इट वॉज 8,000। Yes, 1 year में it was 8,000. Read the question carefully. What are they asking? How much would it have yielded in 2 months? 2 months. तो जिनने भी 16,000 बोला है, what mistake they made? They got it for 2 years. This is for 2 years, not for 2 months. ठीक है? Don't make this mistake. Question को पढ़िए, please. Personal request. ठीक है? So what is this? 8,000 is for how much? Per year. That means if for 12 months, it is 8,000, then what are they asking for 2 months? That is what?
1/6 ऑफ इट। तो यहाँ पे भी 1/6 करेंगे, व्हाट वुड वी गेट 8000 by 6। ठीक है, अभी 0 को इन्वॉल्व कर लेंगे। 8000 by 6 which is 4000 by 3, that is nothing but 1333.33 bar। yes, 1333.33 बार, नॉट 13000। इसीलिए मैंने कॉमा भी डाला था। मैंने कॉमा किस लिए डाला था, यही बताने के लिए कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 10,000, 13,000 है ये, नॉट 1333। प्लीज ऐसा थोड़ा सा ट्रैप का भी थोड़ा सा लिहाज रखिएगा। गिरो, अच्छा ट्रैप में गिरो, ऐसा वाला मैंने। So your answer is what? 1333.33, या उस 0.33 को इग्नोर करना है, तो 1333 रुपीस। बूझे? बूझे कि नहीं? तो ना, जय वाली गलती नहीं करेंगे, वापस करेंगे। आज का 2 लेसन, आज का 2 सीख मिला आपको। एक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 2, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। कुछ भी मिस्टेक कर लो, मेरे को चलेगा अगर आप कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो, मेरे को चलेगा अगर आप क्या बोलते हैं, गलत फॉर्मूला लगा लो, गलत कॉन्सेप्ट लगा लो, इट्स ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि पूरा मेहनत लगता है, राइट। आप पूरा मेहनत करके पूरा आंसर तक आते हो, ये आपको मिला होगा 1333, बट फिर आपने वहां पे देखा कि हाँ यहाँ पे 1 है और थोड़े बहुत 3 है, लगा लो उसी को आंसर। क्या वाली गलती नहीं करेंगे, ओके। वेरी गुड। चलो आशुतोष, यहां तक ठीक है, आगे जाके नहीं बोलेंगे, आगे जाके किसी को मत बोलिएगा, ठीक है। डू नॉट टेल दिस टू एनीवन आउटसाइड। चलो, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ऑलराइट, ये थीटा क्वेश्चन है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, बट स्टिल दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दैट मींस यू कैन वेरी वेल मेक गुड स्कोर। ओके, ट्राई करें। 3 मिनट्स है टाइमर पे। लाइक नहीं किया तो कर दो, याद दिलाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक करना आपका, कर लो। Quickly try this. Also cheers to everyone who fell for 2 traps. यहाँ पे मैं ट्रैप ले कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टीटा है, तो I feel very bad now. तो तने, ये सेशन से आपका हो जाएगा डन, ठीक है। नहीं यार तनिष, नहीं दिया था भाई, माइक गिर गया, इतना एक्साइटमेंट आ गया कि माइक ही गिर गया। माइक ड्रॉप अपने आप हो रहा है, देखो ना, बंदे में टशन इतना, मतलब बंदे में इतना टशन कि मतलब माइक ड्रॉप अपने आप हो रहा है। हाँ, नहीं दिया था, नहीं दिया था तनिष। बस जिनका नहीं हो रहा है उन दूसरों का भला कर रहे हैं। हमसे जो नहीं हुआ था दूसरों का भला कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हो। आप सिंगल हो बस जाके लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो, वही मैं कर रहा हूँ, और क्या। समीक्षा, इट इज ओके, इट इज ओके, डोंट वरी। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइस, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 20% क्वेश्चन को, मेरे को सिर्फ आंसर दो, मेरे को आई डोंट केयर वेदर इट इज फ्रैक्शन, वेदर इट इज परसेंटेज, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर चाहिए मेरे को, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। स्कैम तो चल ही रहा है, मैं खुद चला रहा हूँ, मैं बोल के चला रहा हूँ स्कैम, मैं खुद बोल के चला रहा हूँ स्कैम ही है। Okay. So let's read this question. If a local bank lends 4,500 and receives 6,000, please remember 4,500 is what? Our principal.
Yes, 4,500 is the principal, and it receives, right? The local bank receives 6,000. That means the amount is how much? 6,000. Got it? So what would be the interest then? Interest is the difference between amount and principal. What is the interest? It is 1,500. Clear? Now what is the question asking? It's asking how much does it charge for $100 every year. For every $4,500, there is a 1,500 ka interest. Yes, this is the charge. This is what the bank charges. That means for every 100, that means I got to divide this by 45. I'll get for every 100. For every 100, it would be how much? 1,500 by 4,500. Sorry, by 445. Yes, which is 100 by 9. That is how much? I know, which is 1.11 bar. But question में क्या पूछा? Approximate to 3 decimal places. That means my right answer has got to be 11.111. Unless and until you enter these 3 ones. सुनो guys, ध्यान से सुनो. Unless and until you enter these 3 ones, you will not be getting the full score for this. समझ रहे हो? Are you getting this, guys? Unless and until you will enter 11.111, इसका स्कोर नहीं मिलेगा. अगर आप 11.11 डालोगे तो भी नहीं मिलेगा. अगर आप 11.1111 डालोगे, एक एक्स्ट्रा भी डालोगे तो भी नहीं मिलेगा. Yeah, but actually the answer is not even 11.11. क्या कर रहे हो? This is 300 by 9. Yes, this is 300 by 9, which is 33.33. Okay, it is not 11.11, it is 33.33. Clear? Are you getting this? Yes, no. Done है ना? समझ गया ना? It is 33.33. ठीक है? My mistake, honest mistake. लोगों के बहकावे में आ गया, ऊपर सब 11 point कर रहे, तो मैंने भी डाल दिया. Yeah, this is 300 by 9, which is 100 by 3. 1500 times is 1500, 15 thrice is 45. ठीक है? अरे नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था डराने का, मैं खुद डर गया देख के क्या चल रहा है. Alright, now this basically is nothing but calculating of what? What is this? For every 100 basically means calculation of percentage. So what you've calculated is rate of interest. What you've calculated is R percentage. Sorry. सही जवाब में वापस गलत हो गया. Okay, so this is for 3 years. This is for 3 years. आज से मैं आप लोगों के चैट देखने बंद कर रहा हूँ. आप लोगों की चैट देखने बंद कर रहा हूँ. ये 3 साल का है 33.33. ठीक है? For 3 years it is 33.33. They're asking for every year. बड़े बदतमीज हो बेटा. Okay, so for 3 years it is 33.33. That means for 1 year it is going to be 33.333 by 3, which is 11.111. ठीक है? My bad. सही को वापस गलत कर दिया. Yeah. So what they've actually asked is for every $100 every year is nothing but rate of interest. Yes, what they've asked is for rate of interest. That's going to be what? अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जाओगे आप, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जाओगे, you know interest is equal to P times R times T by 100, है ना? अपने को क्या चाहिए? R चाहिए, R का वैल्यू चाहिए. So R will be equal to I into 100 by
P times T. This is what I कितना है? Extra amount 1500 into 100 by P, which is 4500 into 3. Got it? समझ गए? So you would get what? This is once, this is thrice. So 100 by 9 is your rate of interest. Rate of interest is 100 by 9 in terms of percentage, which is how much? 11.11 percentage. 111 ही रख लेते हैं. So percentage basically means what? Per every 100 per year. Clear? बराबर मिले. ये मैंने समझाया था ना. 4500 का 1500 है तो 100 का कितना रहेगा ऐसे कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है. So anyone who is asking for alternative method, this is it. ये आपका फॉर्मूला लगा के है alternative method. ठीक है, this one. Done? नहीं 3 साल का मिला के, थर्ड ईयर का नहीं है मिलन. थर्ड ईयर का नहीं है, 3 साल का मिला के. इनने 1 साल का पूछा है, 3 साल का नहीं. क्लियर? चेतन वही तो ज्यादा ट्रैप करते ना, ऐसे होता है, खुद ही जाके गिर जाते हैं. क्लियर है सबको? यस. चलो. तो विद दिस गाइस, विद दिस आज का इंट्रोडक्शन सेशन जो था वो खत्म हो गया. राइट? दिस वाज द इंट्रोडक्शन सेशन. गॉट इट? तो अभी से कल से हम क्या करेंगे? वी विल गो इन डेप्थ विद सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस. फिर उसके बाद वी विल गो विद कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस. ये सारे टॉपिक्स है, ध्यान से सुन लो. यस, अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना. सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे. देन वी विल हैव क्वेश्चंस दैट डील विद डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो करेंगे. फिर उसके बाद हम करेंगे ग्रोथ पे क्वेश्चंस. देन वी विल डू क्वेश्चंस ऑन अदर कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स. यस, इंस्टॉलमेंट्स पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, अभी भी आते हैं. इंस्टॉलमेंट्स होगा, फिर होगा, ये मैं अपने आप पे लिख रहा हूँ, चलेगा, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ. इंस्टॉलमेंट्स होगा, फिर उसके बाद वी विल डू डेप्रिसिएशन. यस, एंड पॉपुलेशन साथ में करेंगे. डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है? तो दिस इज आवर गोल फॉर दिस लेक्चर सीरीज. ठीक है? ये कूल है? क्लियर है? अरे चलेगा चेतन, कोई नहीं. आज क्योंकि बेसिक्स था ना, बेसिक्स में हम कितना ही कर लेते, एक दो और क्वेश्चन कर ही लेते, बट ठीक है चलो. Aim is to talk about this. Now all of this we would be covering here on YouTube, but we will be doing, इसके अलावा we will be doing practice sessions. सब पे हम लोग practice sessions करेंगे. ये जो आप YouTube पे attend कर रहे हो that is okay, but apart from that we will be doing classes on special which are also free. ठीक है? स्पेशल पे जो करेंगे वो भी फ्री होगा. क्या करेंगे स्पेशल में? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज का किया था, जस्ट द वे वी डिड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. वी विल बी डूइंग समथिंग सिमिलर फॉर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल. कूल सिद्धार्थ? वेरी सून एक बारी 2-3 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द मैराथन सेशन. ठीक है? जो स्पेशल क्लासेस होगी, मैराथन सेशंस होंगे, उस पे हम क्या करेंगे? वी विल कवर 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही है तो उस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. या अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो चल ही रहा है एक साइड पे, ये तो एक साइड पे चल ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई वांट यू ऑल टू नो इज कल से चालू हो रहा है. 23rd कल है, टुमारो वेंसडे. तो पीपल हु स्टिल हैव इश्यूज विद प्रॉफिट एंड लॉस, श्योर नहीं है सर प्रॉफिट एंड लॉस, इनकॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, सो फॉर ऑल ऑफ दोज व्हाट आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू इज प्लस ले लो. ठीक है? टेक द सब्सक्रिप्शन, कम ओवर ऑन प्लस. कल सुबह 7 बजे, तो आपके पास आज रात तक का वक्त है.
कल सवेरे 7 बजे अगर आप नहीं दिखे तो आपके बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दें। ओके, सो यू हैव टाइम टिल 7 AM। ऐसे में धमकी वमकी नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस अगर और करना है तो हमने अब तक 12 घंटे तो प्रॉफिट लॉस किए हैं यूट्यूब और स्पेशल मिला के, बट इसके अलावा भी करना है तो यू कैन कम ओवर ऑन प्लस। यस, एंड टू टेक एडवांटेज, ये भी चल रहा है, दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग टुमारो। यस, ये अरुण सर का बैच है, यहाँ पे अरुण सर होंगे, अभिलाषा स्वरूप मैम होंगे, अपर्णा रस्तोगी होंगे, राहुल आनंद सर होंगे। तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस बैच एज वेल कि आपको सर मेरे को अलग अलग ऐसा नहीं करना है, सब कुछ एक साथ में ही करना है बिना टेंशन। तो यू कैन टेक दिस, दिस इज हैपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो you can use my referral code Surana Live. Start focusing not just on quant, start focusing on quant, LRDI and VARC. ठीक है, cool. तो उसके लिए all you've got to do is pick up any one of these subscription packages. इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा. Okay, everything would be covered under this. You do not have to पे सेपरेटली फॉर सेपरेट थिंग्स, ऐसा नहीं है. ये अपना नेटफ्लिक्स जैसा है कि मतलब एक बार ले लिया तो आपको पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा, एंड इट इज नॉट इवन कंट्री बेस्ड. आपकी कंट्री में ये नहीं आएगा, सॉरी, अच्छा शो चाहिए 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 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा चोक्ड जैसे मूवी, ऐसा नहीं है. राइट, यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स. यस, whether it is CAT, ZAT, SNAP, NMAT, सब पे बैचेस होंगे. IIFT, CMAT, ये सारे तो है ही हैं. इनके अलावा इफ यू आर प्लानिंग ऑन गिविंग सम इंटरनेशनल एग्जाम्स आल्सो, GMAT, GRE, इन पे भी होगा. राइट, सो make use of this. Options अपने open रखो, start exploring them. Pick up any one of these packages. You can pick the 1 month one or the 12 month one, but if you are smart enough, you know कि एक महीने में क्या ही कर लोगे. So 1 month cost you 3,500, but the 12 month one cost you only 17,500. Yes, where technically it should be costing you how much? 42,000. Correct? Yes. तो वो थोड़ा सा आप देख लो, 42,000 लगेगा, बट अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू ओनली 17,500 इफ यू टेक द फुल पैकेज. 24 month वन इज द लाइटेस्ट ऑन योर वॉलेट. आपके वॉलेट को पता भी नहीं चलेगा कब इतने पैसे चले गए. तो ऑल दैट यू कैन यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव. ये रेफरल कोड यूज करें सुराना लाइव, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. कल कर रहे प्रॉफिट लॉस पे आ जा. It is just 788 rupees per month, which is a little less than what Netflix also charges. ठीक है, तो start prioritizing your day, guys. Start dedicating equal amount of time for each of these concepts. जो लोग सिर्फ क्वांट कर रहे हैं, प्लीज रियलाइज के VARC जो है, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट. कि मैं आज रात को बैठ के पूरा पढ़ लिया, कल सुबह में एकदम विलियम शेक्सपियर निकलेगा, डाउट शैल चांट नॉट look at me in the eyes, ऐसा नहीं हो सकता, तोतले ने बन जाओगे आप. Right, but you will have to practice VARC every single day. Yeah, it's a language and you need to nurture yourself into it. So start considering these. If you want to talk to me, you can definitely reach me out on one of our groups. This is the Telegram group that we have. ये Instagram पे है, इस पे भी आप पूछ सकते हो अगर डाउट है. Here all official notifications will be given. आगे बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है. 2021 has a lot of things in under its hat. So start preparing for it, start prioritizing your day, start prioritizing your other things also. ऐसा नहीं है कि CAT prepare कर रहे हो तो बाकी सब कुछ भूल जाओ, UG को भूल जाओ, अपने काम को भूल जाओ. No, they will also have equal precedence. Okay. चलो, so you can also go check out our previous special sessions जो हमने लिए थे. Right, we've taken a practice session on percentage, on profit and loss. बहुत अच्छा वाला भी किया है, बहुत सारे questions किए वहाँ पे. So go check them out. Install करो अपने phone पे Unacademy learning app. Whether you are having an Android or an iPhone, you can still access all content. Go to special classes. जब जाओगे तो पूछेगा कि कौन भेजा, किसका नाम बोलोगे, सुराना लाइव भेजा.
ठीक है, पासवर्ड पूछेगा कि भाई किसने भेजा है, से सुराना लाइव, ठीक है। Put that code up, start making use of all free content guys. I don't want you to think कि नहीं यार सब कुछ सिर्फ प्लस वालों के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ स्पेशल पे भी हो रहा है, राइट, एंड गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। तो आप लोग वहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज। यू ऑल्सो गो चेक आउट माय प्रीवियसली टेकन क्लासेस, बहुत सारे ऐसे क्लासेस लिए मैंने फॉर 2020 ऑल्सो, फॉर 2021 ऑल्सो, है ना, तो वो चेक दैट आउट। And if you have any doubts about the benefits of Plus, you get unlimited access to all content, recorded and downloadable. मतलब आप डाउनलोड करके रख सकते हो, आगे जाके आपको अगर लगे कि नहीं मेरे को ये वाला कंटेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इनका एग्जांपल अच्छा था, इनका वे ऑफ टीचिंग अच्छा था, तो वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो। यू कैन रीविजिट दैट। You do not have to invest in books because PDF notes will be given to you by people who write books. यस, अरुण सर वहाँ पे लेते हैं, मीनाक्षी मैम वहाँ पे लेते हैं अनअकैडमी प्लस पे, पैट्रिक डिसूजा सर लेते हैं, एवरीबडी हु हैज फेमस बुक्स अराउंड। यस, वो चेकआउट करो, आपका थियोरी, प्रैक्टिस एंड क्विज सब कुछ वहीं पे कवर हो जाएगा। या यू गेट टू इंटरैक्ट विथ योर एजुकेटर, टॉक टू देम, आस्क देम क्वेश्चंस, क्वेरीज। देयर आर लाइफ गोल्स एंड लीडर गोल्स। जिनने भी अभी तक स्पेशल पे आए, आपको पता है कि पूरा पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है आपके परफॉर्मेंस पे, कि आप कितना एवरेज टाइम ले रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन ऑन द लीडर बोर्ड, राइट, कौन टॉप पे रहता है, ऑल दैट। Yes, so start making use of that, guys. And the test series that we have, apparently, it is one of the best test series that the internet could provide you. Currently, there are 200 plus mock tests available, and when I say plus, you know that मैंने उसके आगे count नहीं किया, ठीक है? Which would be not just on CAT but other management entrance tests too. एंड वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट भी होते हैं और उनके एनालिसिस भी होते हैं। यस, प्लस यू गेट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू कि भाई इतने क्वेश्चन ला कहां से रहा है, तू बेच तो नहीं रहा कहीं जाके। Yes. So you can ask as many questions as you have. Ask them wherever you get it from. Doesn't matter. The source doesn't matter. आपके पास question है, वो आप पे doubt आ रहा है, give it to us. We will share. We will help you answer it. Not today, not tomorrow, not later. Now. मतलब live पे होगा वो पूरा. Okay. Cool guys. So I'm expecting some of you tomorrow there for profit and loss session on Plus. देखो आ सकते हो तो आ जाओ, right? And कल शाम में 8 PM to 9 PM, कल वेंसडे है विच इज 23rd December. यस, बी देयर 8 PM to 9 PM। हम लोग और डिटेल में जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। यस, इन डिटेल वी विल बी लुकिंग एट सम cool questions to deal with. Yeah. All right, guys. Thank you very much. Thank you so much, Tanay. I hope you guys have had a great session today, and I hope you will have one in the next session. Thank you very much. Have a great night ahead. Good night. Keep yourself safe and happy. Keep learning, and let's crack it. चलो भाई खत्म हो गया, जाके मस्त